Go ahead, sir. Good evening to all of you, those who are watching our session from Oasis Fertility Bhubaneswar branch. My name is Dr. Prasanta Kumar Nayak. I'm a consultant, fertility specialist, and a endoscopic surgeon at Oasis Fertility Center, Bhubaneswar. So, welcome to all of you. So, today we'll discuss about evaluation of male infertility. So, let us start with the topic. Yeah. So, as all of you must be knowing that a couple those who are planning for pregnancy and staying together, either married or not, but if they fail to conceive within 1 year of regular unprotected intercourse, in such situation we call them they are suffering from infertility or subfertility. But when the couple has an absolute inability to conceive, that is called sterility. That means infertility is something where they have the ability to conceive, but because of some reason, they are unable to conceive. And sterility, usually the people don't have the capacity, or they have some permanent problem or damage to for which they are unable to conceive. And similarly, if you'll see primary infertility, it is those who have already once pregnancy, either have a child or not, but she was pregnant, but this time she is unable to. Those are called primary infertility. These are called secondary infertility. But if she is not pregnant in her lifetime, even if she is married for quite some time, in such situations, it is called primary infertility. So today's topic, I'll speak both in English and Hindi for a proper understanding and more coverage of our audience. So today we'll discuss on male infertility. So as already we have previously also discussed that fertility is something that is a two-person phenomenon, because when a male and female or husband and wife, when they plan to have pregnancy, then only it is possible. If they are planning but still they are not having it, that means the problem can be either in the male partner or in the female partner. So if you'll see, actually in 50% of the cases, the male partner is responsible or the husband is responsible, and in 50% of the cases the wife is responsible. If you'll see individually, then around in 30% cases the male is responsible, and 20% cases both male and females are responsible. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो संतानहीनता, जो जिन लोगों को सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, उनमें से 50% केसेस में मेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंड 50% केसेस में फीमेल्स या वाइफ ही रेस्पॉन्सिबल होता है. तो इसलिए हम किसी को एक पार्टनर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. एंड अगर हम देखेंगे तो एब्सोल्युटली मेल्स या जो पुरुष है उनके केसेस में 30% रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, और 20% केसेस में बोथ एंड मेल एंड फीमेल कंबाइंड हो जाता है. सो दोनों मिला के हम 50% बोलते हैं. तो एनीवे, सो if you'll see that the causes of infertility can be divided into, in males, can be divided into either pre-testicular causes or testicular causes or post-testicular causes. That means the causes which are occurring because of some factors before the testis, means before the actual function of the testis. And there are some causes which are caused because of the problems or the anatomical defects or the physiological issues associated with the testis. That is called testicular causes, and those causes which are actually beyond the anatomy or the boundary of testis, those are called post-testicular. Exactly what are these things that we'll discuss. जैसे कि अगर हम देखेंगे कि जो मेल इनफर्टिलिटी है उसको हम अगर डिवाइड करेंगे कि इसमें क्यों ये हो रहा है, तो इसे देखेंगे तो इसको हम 3 डिवीजन में डिवाइड किए हुए हैं. एक है प्री टेस्टिकुलर, एक है टेस्टिकुलर, एक है पोस्ट टेस्टिकुलर. प्री टेस्टिकुलर का मतलब है ये जो कारण है टेस्टिस से पहले, मतलब टेस्टिस को जो चीज फंक्शनिंग कर रहा है, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, हार्मोन्स है, अगर उसी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको हम प्री टेस्टिकुलर बोलते हैं. अगर टेस्टिस में इटसेल्फ कुछ दिक्कत है तो उसको हम टेस्टिकुलर बोलते हैं. और टेस्टिस के बियॉन्ड, मतलब जो टेस्टिस जहां हमारा स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसके बियॉन्ड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम पोस्ट टेस्टिकुलर बोलते हैं.
So if you'll see the pre-testicular causes, then this can be endocrinologic problems. It can be hypogonadotropic hypogonadism. It can be hyperprolactinemia. It can be diabetes mellitus. It can be some thyroid disorders like hypothyroidism. It can be some androgen steroid abuse or some tumors or something where excess androgen is being produced. It can be also associated with erectile dysfunction, which is also means being governed or being means regulated by the hormones of the central nervous system and all. So even it can be ejaculatory failure is a, so these are all pre-testicular causes. अगर हम pre-testicular cause को देखेंगे, mostly जो हमारे endocrinology का problem होता है, जैसे कि किसको डायबिटीज है, किसको थायराइड का प्रॉब्लम है, किसको हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया का प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को कुछ एंड्रोजन रिलेटेड ड्रग अब्यूज वगैरह का इशू है, और इवन जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इजैकुलेटरी फेल्योर जैसा प्रॉब्लम है, ये सब मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गवर्न गाइडेड होता है, कंट्रोल होता है. तो ये सब चीज के लिए जो इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी होता है उसको हम प्री टेस्टिकुलर कॉजेस बोलते हैं. नाउ if we'll go to the testicular causes of male infertility, then the first thing which comes to our mind is the genetic or the chromosomal defects, mostly in the form of Klinefelter syndrome or immotile cilia syndrome or Y chromosome deletion. And it can be also because of some developmental or congenital defects of the testis, like cryptorchidism. It can be some infections of the testis itself, that is infective or trauma to the testis. Or it can be some antibodies known as anti-sperm antibodies, so which is produced inside the blood, and it destroys the sperms, or their production is affected. Or it can be some vascular problems to the testis, like there's some condition emergency called torsion of the testis, or if there is a varicocele of the testis. Or it can be some immunological factors. There are some antibodies developed inside the body which produces some immunologic damage. और इट कैन बी सम इडियोपैथिक, मीन्स देयर इज नो कॉज. अगर हम टेस्टिकुलर कॉजेस को देखेंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो जेनेटिक या जो क्रोमोजोमल प्रॉब्लम्स होता है मेल्स में. एक कंडीशन बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो इसमें ज़्यादा एक्स वाई वाई मेल्स बोलते हैं. तो उसके साथ एक कंडीशन होता है इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम, जिसमें स्पर्म का मोटिलिटी अफेक्ट होता है, एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है. सिमिलरली वाई क्रोमोसोम डिलीशन भी होता है. ये सब जेनेटिक डिजीज में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द मेल फर्टिलिटी. सिमिलरली सम कंजेनिटल, मतलब जन्म से कुछ प्रॉब्लम रहता है जो माने मेल चाइल्ड में, जैसे कि क्रिप्टोर्किडिज्म, उसमें क्या होता है टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम को डिसेंट नहीं किया होता है, तो उसको हम तुरंत ऑपरेशन करके नीचे लाते हैं. वरना अगर वो पेट के अंदर ज्यादा दिन तक रहता है तो वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण उसका स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होता है. और उसके लेटर लाइफ में अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है टेस्टिस में, अर्काइटिस, और कुछ ट्रॉमा, कुछ डैमेज, इंजरी हुआ है कभी ड्यूरिंग प्लेइंग और ड्यूरिंग वर्किंग, अगर ट्रॉमा हुआ है तभी भी ये टेस्टिस का फंक्शन अफेक्ट होता है. सिमिलरली अगर कुछ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी जैसा कुछ फैक्टर्स ब्लड में डेवलप होने से भी होता है. कुछ ब्लड प्रॉब्लम्स, जैसे कि कभी वैरिकोसिल एक कंडीशन होता है जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है टेस्टिस को, वो बंचेस में, जैसे अर्थवर्म जैसे बंचेस में वो वहाँ फिल होता है, बट एक्चुअली वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, सो वहाँ स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. सिमिलर टर्सन एक कंडीशन होता है जिसमें टेस्टिस में टर्सन हो जाता है, तो वो भी अफेक्ट करता है टेस्टिस का फंक्शन को. अदर कंडीशंस लाइक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन भी होता है. देयर आर सम इडियोपैथिक, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसा भी कुछ चीज है जिसके कारण ये टेस्टिस का फंक्शन को अफेक्ट करता है. सो दीज आर द वेरियस कॉजेस ऑफ टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी. देन इफ विल गो टू द पोस्ट टेस्टिकुलर, मतलब टेस्टिस के बियॉन्ड जो प्रॉब्लम है, जो प्रोडक्शन हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हार्मोन्स ठीक है, फिर भी उनका सेमेन में स्पर्म्स नहीं आ रहा है, या नंबर्स या काउंट से कम हो गया है, तो ये सब हो सकता है बिकॉज ऑफ पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस, where we get obstruction in the epididymis, in the vagina. There can be infection beyond the testis also. This can be after some operations called post vasectomy. मतलब इसमें क्या होता है ना, जो टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो एक चैनल के थ्रू बाहर आता है जिसको हम एपिडिडिमिस बोलते हैं, उसके बाद वेस डिफरेंस बोलते हैं. तो ये
ये सारे चैनल में कभी-कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मे बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ट्रॉमा और सम सर्जरी। सिमिलरली कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होता है जो स्पर्म जो आता है, जो सीमेन बोलते हैं, जो एक लिक्विड होता है, तो उसको कुछ ग्लैंड्स होता है जो कि उसका लिक्विड पार्ट को सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है। एक इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन भी होता है और कभी-कभी ऑपरेशन जो पोस्ट वैसेक्टोमी होता है ना, वास डिफरेंस का, उसके बाद भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस बोलते हैं। So, agar, if you'll see the anatomy of a male reproductive tract or system, here there inside the scrotum there is the testis, एंड टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो एपिडिडिमिस में आता है, और एपिडिडिमिस से और एक चैनल निकलता है जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं या डॉक्टर्स डिफरेंस बोलते हैं। तो उसके थ्रू ये जब बाहर आता है तो वो दे कम इनटू विथ द मींस encounter to glands, mostly the seminal vesicles and the prostate, which actually contribute to the maximum amount of the liquid part of the semen or ejaculate. So वो secretion के साथ ये फिर कॉमन पैसेज हो जाता है यूरिन एंड जो सेमिनल फ्लूइड का, और वो पेनिस के थ्रू बाहर आता है। सो अगर हम देखेंगे कि ये टेस्टिस है और टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है वो एपिडिडिस में आता है, एपिडिडिस में से वो वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस से बाहर आता है, लेकिन वो जैसे कि वो उसका माने आगे बढ़ता है तो वो दो ग्लैंड उसको मिलते हैं, तो एक है सेमिनल वेसिकल एंड अदर इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो जो सेमिनल फ्लूइड है उसका जो मेजॉरिटी जो लिक्विड पार्ट है ये दोनों ग्लैंड से ही आता है, और उसके बाद ये इसका कॉमन कॉमन पैसेज होता है यूरिन का और सीमेन का, तो जो कि पेनिस के थ्रू बाहर आता है, तो ये एकदम ट्रैक्ट है। तो अगर हम देखेंगे टेस्टिस से पहले यहाँ जो प्रोडक्शन होता है उसको जो अफेक्ट करता है मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और इम्यूनोलॉजी, ये सब मैंने बताया था, तो उसके कारण को प्री टेस्टिकुलर हो जाता है। और यहाँ टेस्टिस में अगर कुछ प्रॉब्लम है जैसे इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, मैंने बताया था, तो यहाँ से प्रोडक्शन प्रॉब्लम होने से वो टेस्टिकुलर कॉज हो जाता है। और यहाँ अगर कहीं ब्लॉक हो जाता है एपिडिडिस में या वास डिफरेंस में या इस ग्लैंड्स वगैरह में, तो डैमेज या इन्फेक्शन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस हो जाता है। So let us talk about spermatogenesis. That means how the sperm production occurs inside the testis. Inside the testis, there are so many glands called fine tubule-like structures. These are called seminiferous tubules, and usually we see it under a microscope after cutting the testis. And this seminiferous tubules contains the germ cells and the settle cells. The germ cells are mostly the cells which produce the spermatocytes, and the settle cells, these are the supporting cells. Mostly they produce some hormones and all. So and then our Leydig cells also उसका सपोर्टिंग सेल है इंटरस्टिशियम में, वो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सब के साथ अगर ये सब ठीक है तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट कंटिन्यूज अप टू 74 days, means the time from the means starting of the production of a sperm till it comes out, the entire length is around 74 days, which means अगर हम देखेंगे ये जो टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो मोस्टली जर्म सेल से होता है, और उसका टू सपोर्टिंग सेल्स सेटोली एंड लेडिक सेल्स जहां से हार्मोन्स आता है। बट जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो एंटायर प्रोसेस है वो पूरा 74 डेज का होता है, मतलब जो स्पर्म्स बाहर आता है उससे पहले उसका प्रोडक्शन 74 डेज से शुरू हो जाता है, मतलब टेक्स टाइम। सो बिकॉज वो वहां से प्रोडक्शन होके फिर वो एपिडिडिस में आता है, उसके बाद वो वास डिफरेंस में जाता है, फिर उसके बाद वो बाहर आता है, तो इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम। And if you'll see this, this is the histology or histological anatomy of the seminiferous tubule. Here you can see initially the first cell which produces comes from the germ cells is the spermatogonium, which mitotically divides into primary spermatocytes, which then goes to meiotic division to secondary spermatocytes, then second meiotic division to from the spermatids. From the spermatids, the immature sperms are formed, but finally it gets matured, and the mature or the normal sperms or spermatozoa are formed. And this is the entire process which takes around 74 days. अगर हम देखेंगे ये जर्म सेल्स है, जर्म सेल से जो पहला सेल बनता है वो है स्पर्मेटोगोनियम, उसका एक माइटोटिक डिवीजन होके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। उससे अगर मेयोटिक डिवीजन होता है मेयोसिस, तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, और फिर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में वो स्पर्मेटिड्स बन जाता है। अगर स्पर्मेटिड्स बनता है तो फिर दिस आर इमैच्योर फॉर्म्स होता है,
spermatids जो completely matured हो जाता है, तो finally the complete matured spermatozoa is synthesized. So it is the entire process of spermatogenesis, as we can see. So as you can see, the this is the entire process starts from the spermatogonium, then the spermatids, then the final the mature sperms are formed. So ये जो पूरा process है जैसे कि हमने दिखाया था, spermatogonium से लेकर primary spermatocyte, secondary spermatocytes, फिर spermatid, फिर the spermatozoa is formed. अगर हम if we'll see the entire structure of a single spermatozoa, then we'll find the structures looks like this, and it has a cap-like structure that is called acrosomal cap. It has a head piece, it has a body or mid piece, which mostly contains the mitochondria, that is the energy giving organelle of the cell, and there is a tail, and there is an end piece. अगर हम देखेंगे ये जो है पूरा एक स्पर्मेटोजोआ, एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है जो कि पूरा 74 डेज लगाता है पूरा बनने के लिए. तो इसका एक अपर पार्ट को हम एक कैप बोलते हैं, एक्रोजोमल कैप, जो मोस्टली उसका मोटिलिटी और जो उसका कैपेसिटेशन कराता है स्पर्म्स का. उसके नीचे है हेड, और उसके बाद आता है बॉडी जहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है. उसके बाद टेल और एंड पीस और एंड टेल ये सब रहता है. तो ये एक स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोजोआ का. So, जैसे कि the way we found that how the spermatogenesis occurs, that means from the germ cells out a spermatozoa is synthesized. So after it is synthesized, usually when we evaluate a male person who is suffering from subfertility or infertility, usually we do a test called semen analysis. Usually we call it as husband semen analysis or simply semen analysis, because every time it might not be a husband, it can be a partner also. So in that case, the semen analysis has some important criteria based on which usually we tell whether his semen is good, means having good parameters or not. तो जिस मेल का या हस्बैंड का फर्टिलिटी है, अगर उनका सीमेन एनालिसिस हम करते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उनका सीमेन एनालिसिस से ज़्यादातर पता चल जाता है. तो उसमें उनका जो काउंट्स है या मोफोलॉजी है, मोटिलिटी है, जो स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो सब हम देखते हैं. तो सीमेन एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है. So if you'll see the composition of the semen, so it is a composite mixture, as I told previously also. So it is the things which are coming from the testis, mostly the spermatozoa, along with some secretions. The secretions of the epididymis, this is the channels which it meets on the way, that is the epididymis and vas different secretions are also there. Then it meets to glands, I told, that seminal vesicles and prostate glands as a whole, and along with few small glands are also there. These are called parietal glands. So these glands mostly contribute to the liquid part of the semen. अगर हम सीमेन का कंपोजिशन देखेंगे, इसका जो मेजर पार्ट है, तो उसका फर्स्ट स्टार्ट होता है स्पर्म्स आता है टेस्टिस से, फिर इस एपिडिडमिस बस डिफरेंस के साथ उसका कुछ सिक्रेशन मिलता है, लेकिन फाइनली जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो वहां से ज्यादातर लिक्विड पार्ट आता है, और टू सम एक्सटेंट पैराइट्रल ग्लैंड से भी आता है. If we'll go to the actual analysis of the semen, then what should the normal semen analysis properties? The physical properties, if you'll see, it is a gray and opalescent appearance with a distinctive musty odor. It is viscous liquid and it takes some time to liquefy. That viscous liquid becomes liquefied almost within 30 minutes. And the normal volume in a single ejaculate can be between 2 to 6 ml, and out of which 70% comes from the prostate. So from the seminal vesicle, 20% from the prostate, and the rest from the testis and vulvarethral glands, up to 5%. And if you see its pH, it's a strongly alkaline one. That pH varies between 7.3 to 8. It is never acidic. If you'll see, अगर हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे सीमेंट का, तो ये ग्रेन ओपलेशन कलर का होता है, विस्कस रहता है, विथ मस्टी ऑर्डर रहता है. ये मोस्टली 30 मिनट्स के अंदर इसका लिक्विफेक्शन होता है नॉर्मल केसेस में. अगर ज्यादा देर लगता है तो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है. एंड जो वॉल्यूम आता है एजाकुलेट का मोस्टली 2 to 6 ml रहता है. उससे ज्यादातर पार्ट सेमिनल वेसिकल से आता है 70%, प्रोस्टेट से आता है 20%, टेस्टिस एंड वल्वोरेथ्रल ग्लैंड से 5% आता है. और इसका जो पीएच है वो ज्यादातर अल्कलाइन होता है, बिकॉज एसिड अगर रहेगा, सीमेन अगर एसिडिटी रहेगा, माने एसिडिक साइड में रहेगा, तो स्पर्म्स डैमेज हो जाता है. तो इसको नेचुरली the nature is given the pH is 7.3 to 8, that means in the alkaline range.
अगर इसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, if you'll see the microscopic properties of the semen, then we'll see that the concentration, the normal, the lower limit of the concentration should be around 15 million per ml, and the motility at least 30% to 32% should be progressive motile, and 50% should be fast progressive motile. And the morphology इसका जो spermatozoa का हम देखें ना, इसका the morphology that we see, that it is a cap, it is a head, it is a midpiece, all those structures should be intact, and the cellular elements along with that, like leukocytes and cells and genital tract cells, those also we assess in the semen analysis. अगर हम माइक्रोस्कोप में semen को देखते हैं तो उसका जो स्पर्म कंसंट्रेशन सबसे कम से कम 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, along with उसका प्रॉपर मोटिलिटी एंड जो मॉर्फोलॉजी जो हमने दिखाया था पिक्चर, तो ऐसा मॉर्फोलॉजी जो माइक्रोस्कोप में दिखता है वो भी एक नॉर्मल होना चाहिए। along with that उसके साथ कुछ सेल्स जो ट्रैक्ट का जो सेल्स होता है या लिकोसाइट्स होता है या इन्फेक्शन का जो पॉल सेल्स होता है वो भी दिखा जाता है सेमेन एनालिसिस में, माइक्रोस्कोप में। सो सीमेन एनालिसिस करने के लिए एग्जैक्टली हम लोग जब कोई पेशेंट आते हैं या कोई जिसको रिक्वायरमेंट है, यूजुअली उसको हम कलेक्शन का कुछ तरीका होता है, और those people who come for semen analysis, usually we tell them how to collect and how to proceed for the same. Usually we ask them to have an abstinence of around 2 to 7 days with an average of 3 days, and they should usually they should produce the sample in the lab near the laboratory in the premises provided to them, and they should collect it in a broad mouth container. And if at all they are unable to produce in the near the lavatory, then they can bring it from the home, but it should reach the lavatory within 30 minutes. Usually semen collection का कुछ तरीका होता है जो हम पेशेंट को या जो पर्सन है उसको हम बोलते हैं, जो कि उनको हमेशा ये अगर लैबोरेटरी के पास जो होता है वहाँ सीमेन कलेक्शन करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। वरना अगर इफ ये नहीं कर पाते हैं तो उनको घर से अगर लाना है तो 30 मिनट्स से अंदर देना चाहिए, और मैक्सिमम 1 आवर, बट 30 मिनट्स इज आइडियल, क्योंकि ज़्यादा देर रहता है तो उसका प्रॉपर्टीज वेस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उसके साथ जो कंटेनर यूज करते हैं, एक वाइट मैथ कंटेनर, नॉन टॉक्सिक और क्लीन ड्राई ऑलमोस्ट स्टेराइल कंटेनर दिया जाता है उनको। एंड वो जो दोनों जो कलेक्शन के लिए उनको एक एब्स्टिनेंस में रहना पड़ता है मिनिमम 2 to 7 days विथ एन एवरेज ऑफ 3 days का एब्स्टिनेंस होने से अच्छा है। And after the semen collection, usually the semen sample is being handled with gloved hands, and we maintain proper guidelines to avoid biohazard, because it is a source of various STDs and infections. So if the person is suffering from those diseases, so always we take it as organic fluid, and we maintain optimum care to prevent infection to others or to transmit the disease. So because it can be biohazard. So then the form is being counted with a hemocytometer or macular or Harwell counting chambers, or we can also use the CASA, that is the computerized assisted semen analysis technique, so which can be superior sometimes, and it has some indications where we can go for either method. So एक बार सीमेन कलेक्शन के बाद हम जो उसको असेस करते हैं या प्रोसेस करके उसका जो एक्चुअली जो उसका चेकअप करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन हैंडलिंग के लिए हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है, क्योंकि ये हम लोग ग्लोव्स यूज करते हैं, एंड बिकॉज इट कैन बी बायोहैजर्ड सब्सटेंस, बिकॉज इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन, अगर पर्सन को इन्फेक्शन है, एसटीडीज है, तो HIV है, तो ये सब इन्फेक्शन फैलने का चांस होता है, तो इसलिए इसको वेरी केयरफुली हैंडल किया जाता है। और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसको हेमोसाइटोमीटर के साथ अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, या हर्वेल या मैकुलर चैम्बर्स यूज करते हैं, जिसके बाद हम उसका नंबर्स काउंट करते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं। एंड कुछ एक एडवांस टेक्निक है जो कि एजा टेक्निक है, जो कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड सीमेन एनालाइजर, उसके थ्रू भी ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो दीज आर एडवांस टेक्निक्स ऑफ स्पर्म एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस। And हमेशा every time when we do the semen analysis, a technician or the embryologist, they always try to find that the morphology of the individual sperm should be good, and at least the required number of spermatozoa should have that good morphology. So it is always assessed by, or better if you assess by preparing a strained semen smear. The Papanuclei strain is good, and the spermatozoa viability is being tested by using some supravital stains also, and so they find whether these are stained or unstained area. So from that we can find whether these are actually viable spermatozoa or not. तो इसका मॉर्फोलॉजी जो होता है स्पर्मatozoa का, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, जो कि माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, जिसमें स्पर्म उसका स्टेन, अगर थोड़ा ज़्यादा मैंने असेसमेंट ज़रूरत है तो हम स्टेनिंग करते हैं, पापानुकुलर स्टेन करते हैं, या वायबिलिटी करते हैं तो सुप्रावाइटल स्टेन्स यूज़ करते हैं, तो जिससे स्पर्म जो स्पर्मेटोजोआ है उसका वाइटलिटी एंड उसका मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा से पता चल जाता है. And this is how the 2010 seminogram is there, and of course there is some revision recently, but on an average, if you see the normal parameters of a semen sample, so around the volume of ejaculate should be at least 1.5 ml and above, and the concentration of sperm should be 15 million and per ml, and the total count, at least it should be in the entire ejaculate, should be 39 million and above. The motility should be 32% and above, and the morphology should be 4% and above, and the pH should be between 7.1, 7.2 to 8, means in the alkaline range. The liquefaction time should be at least within 30 minutes, not more than that, and the WBC, the normal number of leukocytes we find is less than 1 million, and fructose should be 13 micromillimole per sample. So if अगर हम देखेंगे तो जो WHO गाइडलाइन जो सीमेन एनालिसिस का जो पैरामीटर है, इसके बाद कुछ लेटेस्ट चेंजेस भी हुआ है, बट ऑलमोस्ट जो गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं उसमें जो वॉल्यूम होना चाहिए वो एटलीस्ट 1.5 ml होना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट, एंड इसमें स्पर्म का कंसंट्रेशन होना चाहिए 15 मिलियन पर ml, एंड टोटल इजैकुलेट का टोटल कंसंट्रेशन टोटल मिला के होना चाहिए 39 मिलियन, एटलीस्ट 32% ऑफ देम मोटाइल होना चाहिए, प्रोग्राम मोटिलिटी होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी में 4% नॉर्मल होना चाहिए, एंड उसका पीएच अल्कलाइन होना चाहिए बिटवीन 7.2 7.3 टू 8, एंड लिक्विफेक्शन 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, डब्ल्यूबीसी लेस देन 1 मिलियन होना चाहिए, एंड इसमें फ्रुक्टोज का क्वांटिटी भी रहना चाहिए इस रेंज में. And if you'll see these sperms, the parameters of the semen are not fulfilling the normal criteria, the normal parameters range, then we can find such abnormalities as it is mentioned. Like it can be aspermia, that is absence of semen in the ejaculate. There is no semen at all. There can be normospermia, means everything is normal with normal parameters. There can be azoospermia. There is semen, but there is no sperms. It can be hypospermia, that is low semen volume. It can be oligospermia. There are semen in the semen, the sperms are there, but their count is lesser than the normal cutoff limit. There can be asthenospermia, means the sperms which are present inside the ejaculate are having lower or poor motility. It can be teratogospermia, means the sperms are having abnormal forms. और अगर हम देखेंगे सीमेन में जो वेरियस abnormal क्राइटेरिया है, जिसमें बिल्कुल सीमेन नहीं आता है उसको हम आस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें सीमेन में सारे पैरामीटर नॉर्मल है उसको हम नॉमोजोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें स्पर्म एब्सेंट है बट सीमेन में लिक्विड है उसको हम आजोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें लो वॉल्यूम सीमेन आता है लेस देन 1.5 ml उसको हाइपोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें सीमेन है स्पर्म्स है बट द काउंट लो है, मींस लेस देन 15 मिलियन पर ml है, या लेस देन 39 मिलियन इन द एंटायर एजैकुलेट है, उसको हम ओलिगोजोस्पर्मिया बोलते हैं. अगर उसमें द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स अगर वो कम है तो उसको आस्थेनोजोस्पर्मिया बोलते हैं. अगर उसका जो मॉर्फोलॉजी अगर डैमेज स्पर्म्स ज्यादा है, डेड स्पर्म्स है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी लेस देन 4% है, तो उसको हम टेराटोजोस्पर्मिया बोलते हैं. Yes, after knowing the various types of the causes or reasons why there occurs infertility at various levels and the semen analysis, let us discuss how we should proceed towards the evaluation of a male fertile or infertile person. The first and foremost thing is we should go for a proper history taking, because a careful history and examination will tell you that whether she has any history of trauma, history of cryptorchidism, history of any damage and infection, all these things will be elicited, and examination will tell you that whether the testis is descended or not, is there any hydrocele hernia or varicocele, any other damage or any other problem is there. Similarly, after that, we should go for the laboratory testing of the semen and some of the blood test if you are suspecting thyroid or prolactin or any other hormonal problems. Then if required, we can go for a ultrasound, mostly transrectal, and also to see that अगर उसका prostate gland और vesicles का gland प्रॉब्लम है तो हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं. सिमिलरली अगर जरूरत पड़े तो हमको इन्वेसिव सर्जिकल टेस्टिंग भी करना पड़ सकता है. वी कैन गो फॉर दिस इन्वेसिव सर्जिकल टेस्टिंग. सो मोस्टली अगर हम इवैल्यूएट करेंगे एक मेल पर्सन को जिसका फर्टिलिटी है, तो उनका एक प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से बहुत सारे चीज़ पता चल जाता है. हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि अभी कभी उसका बचपन में या प्रीवियस ईयर्स में उसको कुछ ट्रॉमा, हाइड्रोसिल हर्निया हुआ था, कुछ इन्फेक्शन हुआ था,
कुछ ऑपरेशंस हुआ था उसी जगह में। उसके साथ-साथ हम उसका एग्ज़ामिनेशन करके भी देख लेते हैं टेस्टिस अपना पोज़ीशन पे नहीं है या नहीं है, या अदर कुछ प्रॉब्लम है, बंचेस ऑफ वेरिकोसिल फिल होता है कि नहीं, हाइड्रोसिल है कि नहीं। उसके साथ-साथ हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, सेमेन एनालिसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ है तो वो जानने को ट्राई करते हैं। जो अगर कुछ ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट एंड वेसिकल्स में, बेस मीन्स हाँ, सेमिनल वेसिकल्स में, तो हम लोग ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं। तो उसके साथ-साथ अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ इन्वेसिव या सर्जिकल टेस्टिंग का भी ज़रूरत हो सकता है। So in the history, mostly we try to find over the age of the patient, the duration of the marriage, the contraception practice, whether they are using any kind of contraception or not. If what is the actual coital frequency and timing, whether what is his occupation, how is he actually working in a blast furnace, working in a nuclear reactor, working in environment has a lot of radiation, working in a standing posture for longer time, or working somewhere very sedentary. All these things, professions, everything is very important. Along with that, more important nowadays we find people are addicted to drugs, alcohol, and smoking, which also affects their fertility and their semen parameters. And so also their medical history, whether he is suffering from thyroid problem, diabetes, all these things, and any operations was performed like hernia, like hydrocele, or even the varicocele, or any other surgery in that part. So अगर हम उसका हिस्ट्री लेते हैं एक पेशेंट का, उसका एज से लेकर के, एज जैसे बढ़ता जा रहा है यूजुअली 50-60 के बाद ऐसी फर्टिलिटी और सीमेन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एंड उसके साथ उनका कितने दिन का मैरिज है, क्योंकि मैरिज गैप से पता चलता है कि ज़्यादा दिन तक मैरिज है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो उसको हमको अच्छे से सर्च करना पड़ता है। वेदर वो लोग मैरिड है, प्लान कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो लोग कंट्रासेप्शन यूज़ कर रहे थे, तो वो भी एक देखना पड़ता है, कौन सा कंट्रासेप्शन यूज़ किए थे। उसके साथ-साथ वो लोगों का हाँ, कितना फ्रीक्वेंटली उन लोगों का संबंध होता है, फिर फर्टाइल फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग, वेदर दे आर फर्टाइल पीरियड को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है, जो हम उनको यूजुअली सलाह में बोलते हैं। उसके साथ उनका ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो लोग जो रेडिएशन एरिया में काम करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से हीटेड एरिया में काम करते हैं, उनका भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट, सो स्टैंडिंग पोस्चर में या सेडेंटरी पोस्चर में, वो प्रोफेशन भी बहुत कुछ अफेक्ट करता है उनका फर्टिलिटी को। एडिक्शन एक चीज़ है, ड्रग एडिक्शन या स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी बहुत सारा बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है उसमें सीमेन पैरामीटर्स को या फर्टिलिटी को, तो वो हिस्ट्री से ही पता चलता है। उसके अलॉन्ग विद दैट, अगर उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन डायबिटीज और थायराइड या प्रोलैक्टिन और एनी अदर हार्मोनल डिजीज, सिमिलरली कुछ सर्जरी होता है क्या उनका हाइड्रोसिल के लिए, हर्निया के लिए, ये सब चीज़ के लिए, अगर ये हुआ है तो फिर हिस्ट्री से ही पता चल जाता है कि अच्छा, इस प्रॉब्लम के लिए हमको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। In the general examination, usually we look at the height, weight, thyroid, breast, and secondary sexual characters. Height, usually some people like the Klinefelter syndrome and all, they are unusually thin built and long height, and some thyroid can be palpable in case of hyperthyroidism, breast gynecomastia and all are being there if there is some hormonal issues, and if someone is have no sexual secondary sexual characters, that means there is some pivotal developmental problems can also be there. सो हम लोग जब जनरल एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर हाइट वेट तो देखते हैं, जैसे कि बताया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह में हाइट ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, वेट थिन बिल्ट होते हैं, और कभी कभी कुछ डिजीज में बहुत मोटे हो जाते हैं। और इवन थायराइड प्रॉब्लम होगा तो थायराइड पाल्पेट भी कर सकते हैं, लेकिन गाइटर हो या हाइपरथायराइडिज्म का कुछ प्रॉब्लम हो, ट्यूमर हो, और कभी कभी ब्रेस्ट गैनेकोमेस्टिया हो जाता है, कभी ये सब हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण होता है, कुछ ट्यूमर्स है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे एग्जामिनेशन से पता हो तो फिर हम उसी डायरेक्शन में उसका सर्च करते हैं। और कुछ लोगों का अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, दैट मीन्स उनका पिवटल डेवलपमेंट में कुछ इशू है, तो उसको हमको सर्च करना पड़ता है। So after that, we go for local examination. In the local examination, usually we try to find out look at the scrotum, whether it is normally situated, whether it is excessively bulged, or any swelling is there. After that, we palpate, we try to find out the testis size and volume. We palpate the epididymis, whether it is properly present or not, and the presence of varicocele can be felt like a bunch of earthworm to the hands and fingers. And similarly, in the for rectal examination, we can also palpate the prostate gland and the seminal vesicles. If any damage or any inflammation, we can also find that. So हम लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं उसमें मोस्टली पहले से इंस्पेक्शन में देखते हैं कि स्क्रोटम में कुछ ज़्यादा स्वेलिंग है, पल्सेशन है, या वहाँ कुछ ट्यूमर जैसा ग्रोथ है। उसके बाद हम पाल्पेट करके देखते
हैं कि ये हाइड्रोसिलिया हार्निया है या वेरिकोसिलिया, जो कि एक बंच ऑफ अर्थों के जैसे पता चलता है। टेस्टिस का साइज से हमको पता चलता है इसका वॉल्यूम विद इन नॉर्मल रेंज है कि नहीं है। एपिडिडिमिस को भी हम पाल्पेट करके देखते हैं, उसका प्रेजेंस एंड उसका लोकलाइजेशन करते हैं। वेरिकोसिल के साथ हम रेक्टल एग्जामिनेशन भी करके प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल का स्टेटस लेके इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन भी पता कर सकते हैं। और उसके बाद जो हार्मोनल स्टडी करते हैं, मोस्टली अगर देखते हैं कि थायराइड एक्चुअली बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है, सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है या कम है, ये सब देखने के बाद हम सेकेंडरीली सोचते हैं कि अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। And when we see the thyroid means hormone levels, if we find that FSH level is within normal limit, then there can be, we take the testicular biopsy. There is a high chance that the production of sperms is there, but it is not able to coming out. So biopsy करके हमको पता चल जाता है कि उसमें sperms है कि नहीं। अगर उसमें है तो उसको हम स्टोर कर देते हैं। फर्टिलिटी सेंटर में हम लोग उसको फ्रीज करके रख देते हैं, बाद में अगर उसका यूज में आता है, लाइक इक्सी या आईवीएफ करते हैं, तो उसको यूज करते हैं। अगर एफएसएस बढ़ा हुआ है, उसका मतलब प्राइमरी में टेस्टिकुलर फेल्योर है, टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम है, उसी कंडीशन में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कार्योटाइपिंग, वी गो फॉर कार्योटाइपिंग। एंड इफ यू फाइंड द एफएसएस लेवल इज लो, देन इट कैन बी हाइपोगोनाडिज्म, दैट मींस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सम प्रॉब्लम इज देयर। अगर हमको दिखता है कि एफएसएच बढ़ गया है, मतलब उसका नॉर्मल है, मतलब उसका टेस्टिस फंक्शन कर रहा है, लेकिन टेस्टिस के बियॉन्ड कुछ ब्लॉक है, इसलिए उस फॉर्म नहीं आ पाता है। उस कंडीशन में हम टेस्टिस को बायोप्सी करके वहां से स्पर्म्स को माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट करते हैं, अगर उसको स्टोर करके भी रख देते हैं, बाद में वो इक्सी के लिए या आईवीएफ के लिए यूज हो जाता है। अगर एफएसएच ज्यादा है, हाई लेवल है ब्लड में, उसका मतलब है टेस्टिस फंक्शन नहीं कर रहा है, टेस्टिकुलर फेल्योर है। तो मोस्ट कॉमनली जेनेटिक प्रॉब्लम में कॉन्जेनिटल कैरियोटाइपिंग करते हैं, तो जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम उसमें पिकअप होता है। अगर एफएसएच लो है, दैट मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहां से पिट्यूटरी जहां से वो आता है उससे प्रॉब्लम है, तो इसको हाइपोगोनाट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। तो ये सारे कंडीशन एफएसएच कैन गिव अस ए क्लू that what can be the actual issue, whether it is a pre-testicular, testicular or post-testicular. So genetic, we go for genetic evaluation, do karyotyping to rule out the Klinefelter syndrome, Y chromosome microdeletion और cystic fibrosis inmutation. So जेनेटिक एनालिसिस से हमको पता चलता है कि कौन सा टाइप का जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताया 47XXY, अगर बहुत लंबा हाइट बढ़ जाता है, डिजिट्स एंड लिम्स बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ इनफर्टाइल जेनेटल ऑर्गन होता है, टेस्टिस एंड पेनिस का डेवलपमेंट नहीं होता है और उसमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। सिमिलरली वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलेशन में भी ऐसे ही उसका स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, या काउंट में प्रॉब्लम होता है, या मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो निकल के नहीं जा पाता है, तो उसमें भी कुछ जेनेटिक इश्यूज रहता है। So this is all about that, how we should proceed with the evaluation of male infertility or males of fertility, because mostly we go to assess take a complete history, and based on that we go for some particular tests and mostly semen analysis, which gives us a clue about the problems that male person is suffering, then we go for the treatment. So अगर हम देखेंगे कि complete history लेने के बाद और एग्जामिनेशन करने के बाद फिर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सेमिनल एनालिसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्मोन टेस्ट करते हैं, उससे हमको एक क्लू मिलता है। उसके बाद अगर हम डिसाइड करते हैं कि इसका जेनेटिक टेस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, कौन सा ऑपरेशन चाहिए, और कैसे उनका फर्टिलिटी को मीन्स फर्टाइल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेप लेते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज मोस्टली हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द इवैल्यूएशन ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी. So hope we have learned something about the male infertility and how to proceed with the evaluation. So thanks for your patient hearing or listening. Thank you all of you for watching. Any question? Well, so there is a question that can sperm motility will be treated because my husband's sperm motility is nil. Well, if the sperm motility is nil, which means there is some inherent problem with the mission of these sperms. So usually we try to find some more causes why it is happening. It can be some chromosomal or genetic problems also, but exactly if we see the sample, if you come for an evaluation, then we'll see exactly what is the motility, and if it is motility is there but a little less, usually with medicines they get cured. If it is completely absent, as you told, the motility is nil,
that means there is some major problem can be there. But if there is some motile sperms and some are not moving, patients usually they improve. Thank you. So someone is asking, how do you evaluate male fertility? Already I have discussed, and I have described the details. Usually we ask the patients to come to our clinic. Then usually we take a complete detailed history, exactly what are the problem they are facing, whether they are having some sexual dysfunction, whether they have any other ejaculatory problem, they don't know exactly what is happening. So in such situations, we take a complete history, we examine the patient. After examination, we send their semen sample for evaluation, along with, if required, if there's some abnormality in that, we send some blood test, some hormone parameters, and if required, we go for some ultrasound and other screening techniques. And from that, we get a clue that what can be the exact problem. Then we go for treatment. So we have to go for a stepwise management. Not directly, we don't jump into some conclusion or treatment. A proper history and clinical examination is very, very important. Yes. What testing is required to determine infertility males? So I have already described a lot of tests that first we have to assess whether it can be a pre-testicular or testicular or post-testicular. So accordingly, and the first and foremost thing what we do is do a semen test. So if the semen test is normal, then we just try to find out whether there is any ejaculatory problem or sexual dysfunction, or the problem is with the wife. If there is abnormal semen parameters, then we see which kind of problem it is. Then we try to find whether it is pre-testicular, testicular, or post-testicular. Mostly pre-testicular causes, mostly blood and other tests, or chromosomal analysis require karyotyping or microarray testing. Or if you suspect some testicular problem, usually you do go for biopsy, or before that we can go for the ultrasound. And if we suspect post-testicular also, it may require some biopsy or some techniques like TISHA and PISHA or MESHA TISHA technique, where we freeze the sperm to prove whether the sperm production is happening or not. And beyond that, if there is any problem in the prostate or the seminal vesicle and or the ejaculatory ducts, and also accordingly as per history or through some gadgets that we are using in the form of transrectal ultrasound and all, so we try to find the problem and accordingly we go for the treatment. Thank you. So the as such for sperms, there are so many tests. So we do some vital means vitality test and also supravital staining. So other than that, just assessing the normal morphology of a sperm. So there are various functional tests of these sperms. So as per the associated problems, we just go do all those things in the lab, and we just reach at a conclusion. Else, for in general, for a general purpose as a public, I can tell you that usually we go for a semen analysis. As I told, the normal semen parameters as per the guidelines, the cutoffs we find, and as per that we characterize which kind of abnormal semen it is. It is always and always it is the semen analysis. Other than the history taking and just for examination, and the first and foremost thing what the test we do in a male subfertile person or a couple where they come for evaluation of their subfertility, the first thing we do or the first test we do is the semen analysis. Yes. uh, it's you cannot just, it is the finding whether the sperm is fertile or not. It's not a single sperm fertility. Usually, as I told, the semen analysis is done where the entire thing is being assessed. What is the volume in the ejaculate, what is the concentration in millions, it should be at least be more than 50 million per ml, or total of 39 million in the entire ejaculate, whether the morphology is more than 4%, whether the motility is more than 32%. So all those things are assessed in the entire semen sample. It's not a single sperm which we assess. Yes. Okay, I think there is no more question. So we can conclude the session.
Can we? Yes. Thank you very much for a patient hearing. Uh, have a great day ahead. Thank you.